everyone, welcome back to Alia B. You guys must be wondering why I'm standing next to a fridge today, and that's because I'm going to be cooking. I have a day off and I've decided to make some use of my time while instead of just like watching TV or actually learning how to cook and maybe understanding the work that goes into preparing the favorite food that I like. Here I have with me two very special people who I will introduce shortly, but I just want to show you my fridge because this just kind of gives you a insight into my life. These are my fridge magnets, and this is something that my sister's friend gifted her. All this, the soups and salads, the breakfast, this is all the bakes, curry, snacks, meat, bhaji, sweet. All of these are my favorites. For example, here there is a beetroot salad, which is what we're going to be learning today. So beetroot salad goes on top. And by learning, I mean I'm going to be learning. And you'll be watching and maybe you can also learn. Then another one of my favorite is rajma salad. Then another one of my favorite is chia pudding, which again we'll be learning how to make today. And eat also, maybe. Then what I love is khichdi. So this I can go on and on. So through the process of this video, you will learn lots about me, my food choices. Food is a very important part of my life, guys. I love food. Okay, so without further ado, let's introduce to you first my head chef. इनका नाम दिलीप है. दिलीप अपने बारे में थोड़ा बताइए. घर पे ये लोग कोई नहीं है, बस ऐसे हमसे मिलने आए हैं. दोस्त है हमारे. आपको मेरे लिए खाना पकाना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है. ओके. कुछ बुरा भी बोल सकते हो ऐसे, कुछ मैं मारूंगी नहीं. मैं सबसे ज्यादा क्या खाती हूँ? आपको इंडियन फूड बहुत ज्यादा पसंद है. That's true. मेरा फेवरेट डिजर्ट कौन सा है? आपका फेवरेट डिजर्ट है अपना ये. भूल कैसे जा सकते हो दिलीप, आप ही बनाते हो. मूंग दाल हलवा. Carol, you cannot cue from there. मूंग दाल हलवा. Dilip is feeling camera shy. ठीक है, आप थोड़ा used to हो जाओ. Carol आ जाओ. So Carol, guys, is the head of my house. Yeah, the house belongs more to Carol than it belongs to me. She takes care of everything that I need and want, like my mother, like my friend. Carol बहुत बात करेगी आज. Carol, आपको क्या बोलना है मेरे खाने के आदत के बारे में? एक तो मैम बहुत स्ट्रिक्ट है अबाउट उनके डाइट के बारे में. शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, बट थोड़ा आगे पीछे करते हैं खाने के लिए. टाइम का उनका ये है. Yeah, so Carol gets very upset क्योंकि मैं टाइम पे खाना नहीं खाती. तो कभी कभी मैं घर आती हूँ 3 बज गए हैं मैम और आपने खाना नहीं खाया है. So all that happens. So today Carol and Dilip is going to be teaching me how to make beetroot salad. Beetroot salad is a salad with beetroot, I think. और क्या डालते हैं उसमें? As you can see, this is very neatly laid out for us, but obviously क्योंकि मैं कर रही हूँ पहली बार. This is the first time I'm cooking, guys, in my kitchen. एक पहले मैंने कुछ केक बनाया था. तो beetroot salad is one of my favorite things. I used to eat it constantly. I remember during Dear Zindagi, क्योंकि मैं गोवा में शूट कर रही थी and was very very hot. So I was only eating this one beetroot salad. तो कैसे बनाते हैं beetroot salad? स्पून के साथ इसको बोल में डालना है. Beetroot is very good for the skin. I'm feeling like a full chef now. तो इसके बाद क्या? पूरा डालना है और फिर मिक्स करना है. अभी क्या करूँ? ब्लैक पेपर देंगे. चाट मसाला. बस. तड़का. गाइस, वन मोर थिंग यू शुड अंडरस्टैंड, मैं दही तड़के के बिना नहीं खाती हूँ. तो जब भी मैं पूछती हूँ, एंड फॉर सम रीजन आई कांट डू विदाउट दही. तो अगर डाइट में भी नहीं है, मैं बोल दही लाओ. मैं दही आता है और वो नॉर्मल कभी कभी लाते हैं ऐसे तड़का वाला. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम लर्निंग कि तड़का में एक्चुअली जाता क्या है. वो आई डोंट गेट स्कैर्ड. पर ये और फिर ऑयल डालना है. 1/4 टीस्पून. ओके, सो दिस इज व्हाट राई एंड जीरा. मैं इसे डाल दूं? सो तड़का में जाता है राई, जीरा, हिंग एंड कड़ी पत्ता. दैट्स माय फेवरेट. गैस को बंद ऑफ करना. हां, कड़ी पत्ता थोड़ा दूर से डालिए. क्यों? तो वो तेल में जाने के बाद क्रैक होगा. हां, अभी इसको इसमें डाल देंगे तड़का को.
मैं निकालूं? हाँ। अभी मिक्स करना है. Yeah. I did do cooking classes in school. There was one like a hobby class where we used to do something, and I learned how to make French fries. But I didn't think I would use the gas in my house. हो गया? Yay! Ta-da! Ready? अभी कौन ट्राई करेगा? कैरल. Yeah. Not looking convinced. थोड़ा सा सॉल्ट कम है बस, बाकी परफेक्ट. तो सॉल्ट तो है ही नहीं इधर. Salt नहीं चाट रहता मसाला डाला था ना, बाकी परफेक्ट. नमक कम मैम है. के लिए परफेक्ट. मैम हाँ, जितना मैम. खाती है परफेक्ट है. Okay guys, so beetroot salad is done and it's not as good as Dilip's, but it's not bad. मतलब एक for a new person, एक beginner के लिए बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा लग रहा है. So after the great success of the beetroot salad, now we are moving on to chia pudding. Chia pudding is something that I can have in for morning for breakfast. I also have it sometimes for snack. अभी फिलहाल मैं snack के लिए खा रही हूँ. Okay, so क्या कर रहे हैं? How do we do it? फर्स्ट chia डालना है. This is also seeming very easy. I've only picked these easy recipes. Ultimate वाला मेरी. Put this in the bowl. Yeah. ये बॉल में डाल दीजिए पूरा. ऐसे ठक करके. Yeah. ऐसे ठक करके. बोलो ठक करके. Okay, ठक करके गए. Coconut milk. Put all. This is half a scoop of Isopure. And then 1 steam. teaspoon stevia. Stevia थोड़ा so that you get a little bit of sweetness, but it's no sugar. Yeah, if you want more, that's good. If you want, you can put, but I don't Yeah. like too sweet. Just Then, mix it. okay, so I'm very gently mixing this. तो इसके बाद क्या करना है? इसको ऐसे छोड़ना है. और automatically this is damn simple यार. But mixing, you just do nicely. Means पूरा क्यों? अच्छे से होना चाहिए. क्यों? क्या होता So है? the plum वगैरह रह जाएगा ना, उसका गांठ जैसा. This is protein Protein का powder is plum. there ना. Inside protein powder ना. तो I want to know दिलीप कैसे mix करते हैं. तो मैं Just I'll so- try and imitate. This, since we're making something that is almost like a semi dessert according to me, my favorite desserts are usually Indian desserts like we discussed in the beginning. I love moong dal halwa. Dilip makes this dudi ka kheer, which is like amazing. Sometimes when I'm like in a cheat mode, then he makes it with proper sugar, piste and everything. And sometimes I say जब मेरे को थोड़ा सा cheat चाहिए पर नहीं भी चाहिए, then he makes a sugar-free version for me. But that's my favorite. तो मैं भी कोशिश करती हूँ. Earlier I used to never be a sweet person. पहले मुझे sweet इतना अच्छा नहीं लगता था, पर पता नहीं क्या हो गया, कुछ ना कुछ. Suddenly I became like, oh मुझे dessert चाहिए and everything. Suddenly my life changed after that. It's very sad. Very sad what happened to me. Other than that मेरे को cheat क्या अच्छा लगता है? तुम लोग बताओ ना. Peanut butter आपको तो अच्छा लगता है ना? Peanut butter. खाते हैं आप. बेसन का बड़ी that what मोहन थाल. मोहन थाल कब खाया है मैंने खाया last? है आपने. I don't remember. मुझे किसी ने नहीं दिया 2017 में था. खाया है. 2017, which is 2 years ago. I just want to tell you. Karen remembers I had 2,000 from 2017. अभी मैं क्या करूँ? सर्व कर दीजिए. Serve? Ready? Ready. Chia pudding हो गया? Yeah. Now this goes into the fridge. So while we wait, just a little bit about my food habits. So I've always, as they say, I love Indian food. I love like certain sabzis and dals and like certain fixed dishes that my mother would make at home every day. And luckily my mom is just like 10 steps away. But even if she was not 10 steps away, she would make sure that my chef, when I moved into my house, would learn all those dishes. And Dilip did learn all of that. So whether it's like there's this sabzi called tomato ki bhaji, which is one of my favorites. Then there's an aloo fry, which is a secret recipe of the Bhatt family, which no one will ever know. Lots of like different rotis, jawari roti, bajra roti, ragi ki roti. So this was it, guys. We started off a little simple with beetroot salad and chia pudding, which the pudding is still cooling. But I think my experience was a lot of fun. आपको कैसा लगा दिलीप? आप 10 में से कितने मार्क्स दोगे मुझे? 8 marks.
Okay. I'm not a full 10 yet. Fine. तो अगली बार हम कुछ असली कुकिंग करने वाले हैं जो आप अभी नहीं देखोगे. You will have to tune in for it next time. और अगली बार हम क्या बनाने वाले हैं? South Indian zucchini sabzi. South Indian zucchini sabzi. That's going to be real cooking, cutting, all of that. So that we'll see next time, guys. Okay, bye. Like, share, subscribe. South Indian style zucchini sabzi. This is the real cooking, so I'm a little nervous. You can see. Oh shit. ये बहुत ऐसे move क्यों हो रहा है? क्या करूँ? Oh shit. Nothing. उसका नहीं लगता.